Vande Mataram everyone. Myself Sangeet Asani. I am from Express Teaching. Today we will read about the chapter Understanding Robotics. It's of chapter of IT. First we will read about the robotics. What is robotics? Robotics is a branch of technology. It's a branch of technology. If we type anything on the Google, it will give the answer. That's the AI, that's the technology that deals with the design. Robots can design anything, construct anything, operating anything is use of robotic. Yes. So now we read about the importance of robotics. Robotic plays a significant and growing role in various aspects of daily life. तो रोबोटिक्स होता है सिग्निफिकेंट ग्रोइंग रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ये बहुत ज्यादा मतलब ग्रोइंग कर रहा है अभी हमारी सोसाइटी में और इसका बहुत सारे यूज कर रहे हैं तो इसका कहने वाला सिग्निफिकेंट ही बहुत जरूरी है और ग्रोइंग रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ इम्पैक्टिंग सोसाइटी इन न्यूमरस पॉजिटिव वेव्स जो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है वो बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स History of robotics. The term robot was introduced in 1920 by Swedish writer Carl Capek. It's the name who introduced the name robot. In his play RUR. What is the full form of RUR? The full form of RUR is Rossum's Universal Robots. In the 1960s, the first industrial robot was created and it was called Unimate. In the 1960s, industrial robot was created. There are 7 types of robots in which in 1960s industrial robot was created named what named Unimate. That's named Unimate. So now we will read about the types of robots. How many types of robots I have told earlier that there are 7 types of robots. What are the types of robots that we will read? Types of robots. There are 7 types of robots. Industrial, medical, educational, entertainment, domestic, agriculture and humanoid. There is one industrial robot which we have studied earlier that first was Unimate. It is these robots are like super strong, can carrying heavy objects in industries like carrying of the car parts or etc. In medical, the robots can supply medicines and can make medicine and do the surgery except doctors. Educational robots can teach us. They can solve our doubts like ChatGPT. If we ask question, he will give answer. Entertainment robot like YouTube. If we search anything, it will entertain us. It will recommend our requirement for our entertainment. And domestic robots are used in homes like vacuum cleaner to clean the floor. Agriculture robots are used in agriculture to harvesting, irrigation or etc. Last is humanoid are the robots that look and act like the humans. They mimic human voice and human expressions. There is one example, Sophia. Sophia is the first humanoid. It can mimic like humans. This all about, and now we will read the key components of robotics. Key component of robotics: power source, actuator, sensors, control system and feeder mechanism. What is power source?
Power source. Robots need a power to operate. It can be stored in batteries, hydraulic, and etc. And what is actuators? Actuators are responsible for the movement of the robot parts. ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं, जो ये चीजें होती है मूवमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुएटर्स पे. अब सेंसर्स पढ़ लेते हैं. सेंसर 1 2 3 4 5. There are 5 sensors. Cameras. I'm recording the video with the cameras only, no? So this is the first sentence. Sensors. I will tell you the definition of sensors. Sensor is the thing which can detect our surrounding by their presence. Microphones. These are called microphones, small microphones. Infrared sensors. Sensors in the car detect motion. Touch sensor. If we touch anything, it will move in the mobile. So that are called touch sensors. Like gyroscopes and accelerometers. They are for measuring orientation and acceleration. जैसे हमको स्पीड और ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वही चीज निकालने के लिए हम गायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर्स यूज करते हैं. कंट्रोल सिस्टम. व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? CPU. That's the robot. Robot is the brain of the robotics. Control system is the brain of the robot. It processes information and give output, like input, process, output. That's the control system. Now at the last, feedback mechanism. Okay, a feedback mechanism allows the robot to do his actions with the received information. फीडबैक मैकेनिज्म अपनी जो उनको मिली है उस पर काम करता है, उस पर एक्शन करता है. दैट आर कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म. 3 laws of robotics. First law says a robot may not injure a human. Who invented the robot? Robot invented by the human being. So robot is the first policy that robot may not injure a human being. हमने बनाया, हमको इंजर कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है. तो फर्स्ट लॉ कहता है कि हम मतलब ह्यूमन बीइंग को रोबोट इंजर नहीं करना चाहिए. लेट्स गो ऑन सेकंड लॉ. अ रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स व्हिच इज गिवन बाय अस. जो हमने ऑर्डर्स दिए है वो रोबोट्स को मानने चाहिए. दैट्स द सेकंड लॉ सेज. थर्ड लॉ, सेल्फ प्रिजर्वेशन एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल. how does somebody सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब हम खुद को एग्जिस्टेंस में रखेंगे एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे. हमको जैसे हम एकदम गिव अप कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है. हमको धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से काम करते रहना, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे. यही कहता है थर्ड लॉ कि सेल्फ प्रिजर्वेशन एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब धीरे धीरे डेवलप करते जाओ और रुको मत. दैट सेज द थर्ड लॉ. शुक्रिया. मेरा नाम है संकेत. आई एम फ्रॉम एक्सपर्ट टीचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना, अगर अच्छी वीडियो नहीं लगी तो मत कीजिए, पर बस एक मित्र के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना जिससे उसकी भी हेल्प हो सके. दैट्स ऑल. जय हिंद, जय भारत.